Hi, I'm Dhruv Daga and welcome you to this video. I'm here to talk about one of the million questions that we as CA finalists have in this journey. That one question I'm going to talk about is कि हमें CA final law पढ़ना चालू कब करना चाहिए? My answer to that is right now. But then auditor's mentality, questioning mind. Question number 2. हमने हमारी क्लासेस तो बहुत पहले कर रखी हैं, अब अमेंडमेंट्स हो गए हैं, चेंजेस हो गए हैं. दिस वॉज मी. दिसंबर में मेरे एग्जाम्स के पहले मैं यही सब सोच रहा था. बट आई हैड वन इम्पॉर्टेंट हाइंडसाइट इन माइंड. मेरे पहले जो 2 रैंक्स थे उसका टॉप कंट्रीब्यूटर वाज लॉ. तो मैं फेब्रुअरी आरटीपीज के लिए वेट नहीं कर सकता था. जितने रिविजन्स पे मुझे चाहिए थे मैं उतने कर नहीं पाता. Institute has already specified 31st October as the cut-off date. जितने अमेंडमेंट्स आने थे वो ऑलरेडी आ गए थे. उसमें से भी कुछ नोटिफाई नहीं होते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं. I used all of this information already available on the MCA website. उसमें rules, acts, amendments in notifications, circulars, all of this was available. Authors की commentaries were also available. Used this to amend my notes. आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़े इसलिए next week I shall be putting out an amendment video for May 2020. This will talk about what the amendments are, why these amendments have been enacted, and main मुद्दे की बात कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, questions कैसे आएंगे. If you want to be automatically notified about this video upload, you may send a message notify NOTIFY on this WhatsApp number, or you may also subscribe to my YouTube channel. On this YouTube channel I shall also share videos on other aspects like answer writing and और जो issues आते हैं on this journey. Law happens to be an important subject to boost the grand total. In fact, my second highest scorer after SFM was law. और अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए कोई भी छोटी मोटी बातें आती हैं, यू मे जस्ट नॉट थिंक ट्वाइस. अपना दिमाग बंद करके मुझे इनमें से कोई भी मीन्स में कनेक्ट करिए एंड आई शैल रिस्पॉन्ड टू यू. This time is crucial for you. If you make the best use of it, if you strategize, you can get those 2 prestigious letters before your name and possibly even 3 AIR. All the very best to you. Look forward to seeing you soon next week.